one chair is vacant here. One chair is there. And in front at least 4-5 chair is vacant. Roll number 1. Spelling of realize. Good, sit. Roll number 5. Spelling of disadvantage. Good, sit. Roll number 10. Spelling of invisible. Good, sit. Roll number 12. Spelling of terrible. TERRIBL. Good, sit. Roll number 15. Spelling of expose. EXPOSE. Good, sit. Roll number 8. Spelling of strange. Good, sit. Roll number 11. Spelling of bubble. Good, sit. Standard 9. The question is, you have to simplify it. 6 into 8 to the power n plus 1 plus 16 into 2 to the power 3 n minus 2 डिवाइड बाई जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट? प्लीज रेज योर हैंड्स. जो बना पाएंगे 100% श्योरिटी रखते हैं सिर्फ वही हाथ खड़ा करेंगे. प्रिया, क्या नाम है? प्रिया या प्रियंका? ओके, कम एंड सॉल्व. आपने हाथ उठाया था ना, तो फिर क्यों हाथ उठाया आपने? हाँ, केवल मतलब दिखाने के लिए? मुझे पता है आप में से बहुत लोग सिर्फ दिखावा करते हैं. फिर से हाथ खड़ा कर. तुम आ जाओ ऋषि. अब बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है मैं क्या समझूं? कभी रिवाइज नहीं करते हो, बस घर जाते हो कॉपी रख देते हो, बस हो गया. ये वीडियो मैं सीधा सर के पास भेजूंगा, है ना? तुम लोग वैसे नहीं सुधरोगे. चलो सब लोग सॉल्व करो. बन जाएगा पीयूष? सुधांशु? यस सर. आपसे बन जाएगा दीप ज्योति? यस सर. लक्ष्मी यस सर. बन जाएगा? यस सर. क्यों नहीं बनेगा सोनल? क्या मैंने कहीं बताया इस क्वेश्चन को? देन वाई यू कांट? बोलो, कुछ बोलो. थोड़ा सा डाउट है, और ये तो रिवीजन पे ही दूर होगा.
तो ये तो करना चाहिए। जिसका बन जाता है रेज योर हैंड, आई विल चेक योर कॉपी। बन गया, यू सॉल्व इट, ओके वेरी गुड। पवन ना, आर्यन, ओके। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। You discuss people, you are a cheap mind. You discuss events, you are an average mind. And you discuss ideas, you are a great mind. Now check your category, which type of mind you are by the type of the discussions and the activity that you do. A standard 10. The question is 2 into a square of x plus k into x plus 3 is equal to what? 0. The special case is we have to find the value of k. In this question it is given it has 2 roots and both roots will be what? Equal. Both roots will be in this situation or condition you have to find the value of k. Okay. I am calling one student who will solve in the board and rest of all you have to solve in your copies. So today Ajay Kumar will come to the board and solve this question. Yeah. And your time start now. Hurry up. Within 3 to 4 minutes you have to solve this type of question. It is not the question of 5 minutes. बात पता है क्या, हर आदमी स्ट्रगल करता है। मुझे ऐसा लगता है कि बुरा वक्त सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। In the last class I explained about the cube and cube roots. Yes sir. Okay. Yes or not? Yes sir. Okay. So are you knowing right now how can we find the cube or cube roots? Yes sir. Okay. How many questions you solved? Question number 10. Till question number 10. There were no problem to 1 to question number 10. Seriously, you solved it? It was very basic questions. Yes or not? Yes. Okay. Today we will move to the next question and it will be question number 11. Give me a book please. The question is, look at the question. What is the smallest number by which 432 should be divided so that quotient is perfect cube? What is the number? 432. 432. So this type of question
you can solve very easily by taking LCM. By taking LCM. I have to multiply or divide? Divide. Very good. Okay. So at first take the LCM by 2, 216, 200 and what? Again 2, 108, again by 2, 54, again by 2, say 20, again by 3, 9, 3 and 3. Yes or not? Yes, sir. So the total, the resultant will be what? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Yes or not? Yes, sir. For perfect cube, it must be the one number 3 times. Yes or not? Yes, sir. Look, 3 is 3 times? Yes, sir. Okay, 2 is 4 times. But I need only what? 3 times. So, what will be the solution? If I divide this by 2, if I divide this by what? 2. Then 1, 2 and 1, 2 will be cut. And the rest will be 2 into 2 into 2 and 3 into 3 into what? 3. Then by this way, this number will be what? Perfect cube. Yes or not? Yes. So what will be the answer? For which number we have to divide? For what number? Huh? By what? 2. By 2. If I divide by 2 this number, the number will be 432 is the number. And when we divide by what? 2, the number will be 216 and it will be a perfect cube. Very simple. Yes or not? क्या आप सेम टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो? नहीं बनेगा. मल्टीप्लाई भी करना रहेगा तो इसी तरीके से बनाएंगे, डिवाइड भी करना रहेगा तो द सेम वे बनाएंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टैंडर्ड 10 मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख दिया है. फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को बाय द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. मैं किसी एक को बुलाता हूँ, बाकी लोग कॉपी में बनाएंगे. ठीक है? ओके. साइना कम. आप कल भी आए थे? यू हैव 4 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट. कॉपी दिखा दो. राइटिंग और बेहतर हो सकता है. एग्जाम में राइटिंग पे भी मार्क्स मिलता है. और डी लिखो अच्छे से, 0 जैसा दिख रहा है. A should be look like A. Okay? Good. दिखाओ कॉपी, दिखाओ तुम अपना कॉपी. नहीं, अजय अजय दिखाओ. डी कितना है? खड़ा ही रख. कॉपी लाओ आप. क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ठीक.
गुड बना. साइना, स्क्वायर ऑफ 6 कितना होता है? 12. स्क्वायर ऑफ 6 12. Standard 9. In the previous class, we discussed about the two topics. The first topic was about the momentum, yes or not? Yes. And second one was Newton's second law of what? Motion. सबको याद है स्टेटमेंट? एटलीस्ट स्टेटमेंट तो याद होना चाहिए क्योंकि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यस और नॉट? लेट्स चेक. मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ स्टेटमेंट. मैं आगे से ही चेक करता हूँ कि पहले कितना पढ़ता है, कौन पढ़ता है. यू, क्या नाम है आपका? रिया. स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. या Second law of motion. जोर से बोलना. The statement of second law of motion is directly Fail. according to You, this law, यहाँ बोलो. according to this law, momentum is directly proportional by फैल. मैं तेज बच्चों को तो ही पूछूंगा ही नहीं. पहले मैं चेक करता हूँ तुम कितना. क्या नाम है आपका? सिमरन. बताओ. the proportional of फैल. कल आई थी आप? हाँ, उठो. बताओ. according to the law, the change of momentum, वेरी गुड. आगे बोलो. फैल. यस. the change of momentum in per given time is directly proportional to फैल. उठो. यस, यू शिवम. बताओ. या सेकेंड लॉ. The change of momentum per unit time is directly proportional to the unbalanced force at the direction of unbalanced force opposite to the velocity is known as second law of motion. गुड. बैठ जाओ. मैं और चेक करता हूँ. आप उठो. बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. The rate of change of momentum per unit time is directly proportional to the applied and balanced force. Applied and balanced force in the direction of. In the direction of velocity. बैठ जाओ. Okay, so now I am going to ask question answer of chapter 1. Priyanka, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? the child sees many things in the fair like dove, butterflies, dragonflies, etc. He lags behind because he was fascinated by dead things. Okay. Alhan, in the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? The things that are wanted by him in the fair: first burfi, second garland of gulmohar, third balloons, fourth wanted to hearing the snake charmer flute, fifth and they wanted to go on roundabout. And what next question? Why does he move on without waiting for an answer? Because he knows that his parents would deny his request. Deny his request. Very good. Sick. Okay. Aryan, when does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? The boy realized he was lost when he wanted to go to the roundabout. He was so fascinated by the roundabout that he made a bold request to his parents that he wanted to go to the roundabout. But he got no replies. So he turned around. He could not see his parents.
he turned everywhere and started running. He showed his insecurity and anxiety by the following ways. First, he started running everywhere and crying about his parents. Second, he started going through between people's legs and trying to find his parents. Okay, very good. Sit. Sonali. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? The lost child lose interest in the thing that he wanted earlier because he had lost and he was united with his mother and father at that time. Okay, good. ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। चढ़ गया ना बुखार, लग गई ना मुझे जमाने की। क्या जरूरत है तुम्हें इतने दिनों बाद नहाने की? इतने दिनों बाद नहाने का क्या मतलब सृष्टि? इतने दिन बाद नहा के आई ना आज तो। कार्यक्रम था इसलिए आज इतने दिनों बाद नहा के आई। मेरे पापा बैठे हुए, पूछ लो, मैं रोज नहा के आती हूँ। इसी को याद करते हुए आज हम लोग एक महोत्सव मना रहे हैं अपने आजादी का, कि आज हम आजाद हैं और इस स्टेज पे या विभिन्न कार्यक्रमों में जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम।